Any doubt from the statement? So let me recall you the statement. F over K be an extension of degree n, and F dash over K dash be an isomorphic extension. So means F is isomorphic to F dash, K is isomorphic to K dash, and this map between F to F dash, isomorphism between F to F dash, extending the isomorphism between K to K dash. So, or in other words, restriction of phi on K is phi naught. So if E dash over K dash is a normal extension containing F dash over K dash, then there are at most n homes from F to E dash extending phi naught. So this part, as I told you yesterday, this part directly comes from the result that we discussed, I think, day before yesterday. It's this, right? The proof I have already given to you, right? This we have discussed on lecture 23rd. All right. So further and the normal closure. So in this part, you are getting at most n homes from F to E dash. That means you have at most n homomorphic images of F in E dash. You consider all these homomorphic images in E dash, take their union, and then consider the field generated by this union. So this field generated by the union is precisely the normal closure of F dash over K dash. That's what the second part is. The normal closure of F dash over K dash is the field generated by all these homomorphic images of F in E dash. And then moreover, following conditions are equivalent. So this we will discuss. All right. So first thing, if you recall, yesterday we proved this. Look at the statement, prove this lemma. F over K, E over K, finite extension, E over K is a normal extension. So if there is a K home from F to E, then any K home from sub extension of F over K can be extended to a K home from F to E, right? So इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को मॉडिफाई करेंगे बिकॉज द मॉडिफाइड स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड इन द लेमा. सो मॉडिफिकेशन क्या है, लेट मी टेल यू कि इनफैक्ट आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड हियर f over k and e dash over k dash be finite extensions. तो वहां पे क्या था, e over k स्टेटमेंट, e over k था, राइट? सो बेस फील्ड सेम था, यहाँ पे k dash कर दिया, k dash इज आइसोमॉर्फिक टू k. सो नॉर्मल वहां भी था, यहाँ पे भी नॉर्मल है. सो ओनली चेंज इज दिस वन. वहां पे ये k dash k था, राइट? एंड रेस्ट इज ऑल राइट. सो इफ देयर इज ए होम फ्रॉम f टू e dash एक्सटेंडिंग फाई नॉट, होम की जगह वहां पे क्या था, k होम, फिक्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ k. अब यहाँ पे है एक्सटेंडिंग फाई नॉट, देन any home from any sub extension of f over k extending phi naught can be extended to a home from f to e dash. So tell me, I mean, इसको exactly the same proof will work. जहां पे भी k home है वहां पे आपको phi naught लेना पड़ेगा. That's the only change. Will you do the proof? Because this part I will use in the proof of the theorem. This statement I will use. Will you write the proof yourself? Yes. Exactly the same proof will work. थोड़ा सा minor change करना पड़ेगा as per the requirement. So what I can do, I am leaving as an exercise to you. और अगर कुछ problem हो, you can ask me in the next lecture. Will it be all right? Yes, sir. So
Please write the proof. Complete proof. ओनली चेंजेस यहाँ पे इस स्टेटमेंट में के होम दे रखा है सब जगह, क्योंकि बेस फील्ड दोनों जगह के है। जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट है वहां पे के की जगह यहाँ पे आइसोमॉर्फिक फील्ड ले रखा है के डैश। अकॉर्डिंगली के होम की जगह वो हो जाएगा एक्सटेंडिंग फाई नॉट। दैट्स द ओनली चेंज। सो प्लीज राइट दिस प्रूफ. In case of any difficulty, ask me in the next lecture. All right. So come to the proof of the theorem. So by that corollary, which we have discussed in this 23rd, it's a corollary, I hope, yeah. So by previous corollary, so I'm writing by previous corollary. You cannot write this in the exam. I hope it is understood to all of you, right? You need to quote the complete statement while writing the proof in exam. So by previous corollary, there are at most n homes from F to E dash extending phi naught. All right. Suppose, so now, so this part is quite obvious. Look at the statement, this first part. There are at most n homes from F to E dash extending phi naught. Now I'm going to write the proof of this. The normal closure of F dash over K dash is the field generated by all these homomorphic images. So suppose E double dash is the subfield of E dash generated by all these homomorphic images from F to E dash extending phi naught. So suppose E double dash is the subfield of E dash generated by all the homomorphic images, or generated by the union of all the homomorphic images of F in E dash So फर्स्ट पार्ट में आप कह रहे हो ना, देर आर एटमोस्ट n होम्स फ्रॉम F to E dash एक्सटेंडिंग फाई नॉट. इन सब का यूनियन लिया, यूनियन ऑफ ऑल होमोमॉर्फिक इमेजेस ऑफ F in E dash एक्सटेंडिंग फाई नॉट. So this E double dash, I want to show that it is the normal closure of F dash over K dash, right? So one thing, look at the statement once again. एक मैप तो F से E dash में आपको दे रखा है. Can you tell me what is that? In this statement, there is a map given to you from F to E dash extending phi naught. What is that? Yes. Can anyone look it from the statement?
देखो I phi, of course phi is a map from F to F test. F test is contained in E dash. So phi, by extending the codomain, you can treat this phi as a map from F to E dash. So that means एक मैप तो स्टेटमेंट में है, राइट? सो E double dash is the subfield generated by union of all these homomorphic images. So can I say that then K dash contained in F dash, F dash contained in E double dash, or E double dash contained in E dash. Is that right? ठीक है, क्योंकि इस यूनियन में फाई ऑफ एफ भी इस यूनियन में ही है. ठीक है, सो यू हैव दिस. इज दैट फाइन? See, ये तो डायरेक्टली बाय डेफिनेशन, बिकॉज ई डबल डैश इज द सबफील्ड ऑफ ई डैश, सो नेचुरली ये दे ही रखा है आपको, बस यही आइडेंटिफाई करना है, द मिडिल इंक्लूजन. मिडिल इंक्लूजन बिकॉज फाई ऑफ एफ इज इन द यूनियन. All right. So now what I want to show that this E double dash is the normal closure of F dash over K dash. So to show, let me write, then we'll explain that E double dash is the normal closure. In fact, you need to recall the definition of normal closure. E double dash is the normal closure of F dash over K dash. Equivalently, we will show that number one. So basically, we will equivalently we will establish the two facts. And number one is E double dash contain all the roots of all the irreducible polynomials over K dash having a root in F dash. E double dash contains all the roots of all the irreducible polynomials किसके ऊपर? K के ऊपर over, sorry, K dash के ऊपर over K dash that having a root in F dash, at least one root in F dash, which has one root in F dash. This is number one. Number two, we want to show that E double dash is the least such extension. That means E double dash is generated by all the roots of all the irreducible polynomials that are having a root in irreducible polynomials over K dash, all the roots of all the irreducible polynomials over K dash having a root in F dash. और ये सारे के सारे रूट आपको किससे एडजॉइन करने हैं?
बेसिकली k dash पे over k dash. So इसको कुछ ऐसे पढ़ना है, e double dash is generated by all the roots over k dash. Got it? So is this all right to you? Look at this statement. E double dash is the normal closure of f dash. To show that E double dash is the normal closure, equivalently we will show these two facts. So if I establish these two facts, E double dash will be the normal closure. Is this all right to you? Yes, Is this sir. all right? Because you need to recall the definition of normal closure. Normal closure कैसे define किया था? F over के आपके पास कोई extension है, then the least normal extension of K containing F is the normal closure. Of F over K. और इफ यू रिकॉल ये नॉर्मल क्लोजर हमने कंस्ट्रक्ट कैसे किया था, तो कंस्ट्रक्ट भी हमने नॉर्मल क्लोजर ऐसे ही किया था कि लेट मी रिकॉल यू, ये फाइनाइट एक्सटेंशन है, सो एफ कुछ ऐसा होगा कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, राइट? देन वी कंसीडर द MMP, so PIX MMP of alpha I for all I over K, and then we consider the product polynomial F to be the P1 P2 Pn, and then the normal closure basically will be the minimal splitting field of this polynomial over K. Is that fine? Is this all right? तो basically ये जो minimal splitting field कैसे मिल रहा है हमको? We are getting this field by adjoining all the roots of P1, all the roots of P2, all the roots of Pn, और ये P1 P2 Pn क्या है? They are the irreducible polynomial over K that are having a root in F. P1 का एक रूट अल्फा 1 F में, P2 का एक रूट अल्फा 2 F में, and so on. So is that fine? Yes, sir. So basically, to establish that this E double dash is the normal closure of F dash over K dash, we need to establish these two facts. So इन दोनों को establish करेंगे हम लोग. Number one, this, that E double dash contain all the roots of all the irreducible polynomials over K dash having a root in F dash. And number two, E double dash is generated by all such roots over K dash. Okay. So actually इसको A और B कर देते हैं, because 1 2 we are using in the statement. So let's call it A and let's call it B. All right. So to establish A, let's say F dash X in K dash X be an irreducible polynomial having a root alpha dash in F dash. What I will show, all the roots of F dash will be in E double dash. That's what I will show. Okay. So now alpha dash है F dash में और F is isomorphic to F dash.
सो इसका अल्फा डैश का एक प्रीमेज होगा. सो देन there exists alpha in F such that phi alpha is alpha dash. All right. One more thing. ये f dash suppose आपका कुछ polynomial है, let's what you want to call, maybe ai dash xi I from 0 to n. तो इन सब ai dash का भी प्री इमेज होगा k के अंदर, बिकॉज ये कोफिशिएंट कहाँ से आ रहे हैं, these are in ai belongs to k dash. So then fx, which is summation I from 0 to n ai xi, ये kx में होगा, where what are these ais? They are the pre-images of ai dash under phi naught. And phi is an extension of phi naught. It's given to you. Is that fine? Okay. That is basically what is happening. You know, phi naught is a field home from k to k dash. So phi naught, this field home will induces a ring isomorphism from kx to k dash x. That is phi naught dash fx is f dash x, where phi naught dash from kx to k dash x is the induced isomorphism. The isomorphism induced by phi naught. All right. So हो क्या रहा है कि कैन आई से दैट ये अल्फा डैश है रूट एफ डैश का. कैन आई से दैट कि ये जो अल्फा है ये रूट होगा एफ एक्स का. और वन मोर थिंग, एफ डैश एक्स इरिड्यूसिबल है तो एफ एक्स भी इरिड्यूसिबल होगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड आइसोमॉर्फिज्म है इरिड्यूसिबिलिटी प्रिजर्व करता है. इज दैट फाइन? Yes, sir. एंड वन मोर थिंग कि ये जो अल्फा है रूट होगा एफ का. इज दिस ऑल्सो ऑल राइट? नहीं, आप देख सकते हो एफ डैश अल्फा, this is what summation ai dash sorry alpha dash this is summation ai dash alpha dash I. इसको आप लिखोगे and this is 0, you know, this is summation phi naught और phi is an extension of phi naught, right? So चलो अभी phi naught ही लिख देता हूँ. phi naught ai phi alpha and then whole power I. इसको लिखेंगे phi ai phi alpha power I. इस I को मैं अंदर ला सकता हूँ because I know कि phi preserves multiplication, and this I can write it as phi of summation ai alpha I, because phi preserves addition as well. And this is what in the bracketed term, this is phi of f alpha.
तो फाई ऑफ एफ अल्फा इज 0, फाई 1 1 मैप है, फाई इज ए फील्ड होमोमॉर्फिज्म, तो 1 1 है, 1 1 है तो एफ अल्फा इज 0. So that means हुआ क्या? Let me recall you what we have done. We started with an element alpha dash, which is a root of irreducible polynomial f dash x over k dash x, right? Alpha dash के corresponding pre-image होगा alpha, which is in f. f dash x के corresponding एक polynomial होगा kx पे, which is fx. So what we have proved कि अगर alpha dash f dash का root है तो alpha जो pre-image है alpha dash का, it will be the root of corresponding polynomial. That's what we have shown. And because ये जो induced isomorphism है irreducibility को preserve करता है, so fx irreducible भी होगा. As f dash x is irreducible over k dash, and phi naught dash fx is f dash x. So the conclusion is fx is irreducible over k. All right. So now come back to alpha dash. Alpha dash कहाँ पर है? F dash में. F dash sitting inside E dash. So, and E dash over K dash is a normal extension. It's given in the statement. E dash over K dash, it's a normal extension. So basically you have a reducible polynomial. What is that? F dash x over K dash having a root alpha dash in E dash. So it will have all the roots. E dash will have all the roots. So E dash contains all the roots of f dash x. So let's say beta dash be any root of f dash x in E dash. Let's say beta dash be any root of f dash x in E dash. All right. So what is happening? You have a field K, isomorphic field K dash. आइसोमॉर्फिज्म आपको दे रखा है फाई नॉट. यहां पे एक पॉलिनोमियल है K के ऊपर fx, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है. करस्पॉन्डिंग इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है f dash x. ठीक. नाउ अल्फा fx का रूट है और कहां पे? f में. ये f के अंदर है और ये आई मीन ई डैश के अंदर है. f dash contained in e dash, that's fine. तो अल्फा यहां पर है, अल्फा डैश एफ डैश के अंदर है, राइट? अल्फा इज हियर, अल्फा डैश इज हियर. तो के अल्फा विल बी आइसोमॉर्फिक टू के अल्फा डैश. इज दैट फाइन? ठीक है. Yes.
Yes, sir. So then K alpha will be isomorphic to K dash, beta dash, sorry. I want beta dash, not alpha dash. तो बीटा डैश है यहाँ पे, बीटा डैश यहाँ पे नहीं है, बीटा डैश है, जस्ट वेट, ई डैश में। इसको हटा सकते हैं, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट आई नीड इज ई डैश, ई डैश के अंदर है बीटा डैश। So K alpha will be isomorphic to K dash beta dash. Or if this isomorphism is psi, then you know this psi extends phi naught and maps alpha to beta dash. Where? Psi extends phi naught and psi alpha is beta dash. Is that fine? अब जरा ये जो रिजल्ट जो मैंने लिखा था इसको लगाते हैं। ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ना, दिस वन, जिसका प्रूफ आपको which I have given as an exercise, इसको this we want to invoke now, ठीक है। तो यहाँ पे f over k है, f over k हमारे पास वहां भी है, e dash over k dash we are having, और एक मैप दे रखा है हमको, k is isomorphic to k dash, that is also fine, normality we already have. So if there is a k home from f to e dash extending phi naught, हमारे पास है phi, right? So any home from sub extension of f over k to e dash can be extended to a home from f to e dash. तो जो सब एक्सटेंशन है मेरे पास f over k का, what is that? k alpha over k, और ये कहां पर है? k dash beta dash, this is an e dash. So is that fine? Yes. बेसिकली f ओवर k मेरे पास एक्सटेंशन है, k अल्फा ओवर k सब एक्सटेंशन है, k अल्फा से e डैश में मेरे पास मैप है which is extending phi naught, what is that? Psi. So this, by the result, this psi can be extended to a home from f to e dash. Then by result, और ऐसे करते हैं, psi can be extended to a home let's call it neta, from f to e dash. Is that fine? ठीक है, Yes. क्योंकि okay, so now I can show that, because let me recall you so far what we have done so that it will give you a clear picture. We were trying to establish the point number a. A says that e double dash contain all the roots of all the irreducible polynomials over k dash having a root in f dash. So we started with an irreducible polynomial f dash x over k dash having a root alpha dash in f dash. Now we want to show that all the roots of this polynomial f dash x lies in e double dash, ठीक है। तो इस f dash x के सारे रूट्स e dash में होंगे, because e dash over k dash is a normal extension.
सो सपोज बीटा डैश इज एनी रूट, तो ये बीटा डैश अगर मैं दिखा दूं ई डबल डैश में होगा तो डन, बिकॉज इट्स एन आर्बिट्ररी रूट. ठीक है. So that's what I want to show, that this beta dash will lies in E double dash. So what is happening? Thus neta of alpha, neta extends psi. Is that fine? Psi can be extended to neta. That means neta extends psi. So this neta alpha is psi alpha. And what is psi alpha? Psi alpha is beta dash. Psi alpha is beta dash. तो ये कहां पर है? नीटा अल्फा, दिस इज इन द इमेज ऑफ एफ. ठीक है. और ई डबल डैश क्या है? ई डबल डैश इज द सबफील्ड ऑफ ई डैश जनरेटेड बाय all the homomorphic images of f in e dash. तो ये कहां होगा बाय डेफिनेशन? ई डबल डैश में. Is that fine? Yes. तो पॉइंट इज बीटा डैश कहां आ गया? ई डबल डैश में. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो. And because beta dash is arbitrary, so E double dash contain all the roots of f dash x. So this proves A. कुछ कंफ्यूजन हो अभी तक तो पूछो. Yes? Any doubt so far? Yes? कुछ डाउट है? In No, case, sir. okay, fine. So now let's prove B. So look at the statement B part. What is that in B? E double dash is generated by all the roots. थोड़ा दो बार हो गया क्या? E generated by all the roots of all the, इसको हटा दो. E double dash is generated by all the roots of all the irreducible polynomials over K dash having a root in F dash over K dash. ठीक है. तो now E double dash के जो जनरेटिंग सेट है वो है क्या? What is the generating set of E double dash? Look at generated by union of all the homomorphic images. तो जो homomorphic images of F in E dash हैं which are extending phi naught, उनका जो union है that is the generating set for E double dash. ठीक है. तो ये जो generating set है which is the union, if I show that every element in this union will be a root of some irreducible polynomial over K dash having a root in F dash, then done. Is that fine? Basically, I want to establish this E double point number B, that E double dash is generated by all the roots of all the irreducible polynomials over K dash having a root in F dash. So अगर मैं and I know what is the generating set for E double dash. Generating set for E double dash is the union of all homomorphic images of F in E dash extending phi naught. तो ये जो generating set है इसके हर एलिमेंट
every element of the generating set will satisfy some irreducible polynomial over k dash having a root in f dash. If I show this, then done, right? Yes, sir. So that's what we will do to establish B. So to show B, we want to show that every element in every homomorphic image of F, right? So every element in theta F, let's say theta is, suppose you have a homomorphism from F to E dash extending phi naught. Let's call it theta in theta F, where theta from F to E dash is any home extending phi naught. So every element in theta F satisfies an irreducible polynomial over k dash having a root in f dash. So because theta is arbitrary, once I do this, then every element of the generating set will satisfy some polynomial, irreducible polynomial over k dash having a root in f dash. So this proves B, right? So start with an element in theta F. So let's say gamma dash, any element in theta F. So you must have its preimage, that is gamma dash will be equal to theta gamma. This is for some gamma in F. All right. Let's say Gx MMP of gamma over K. All right. So as G gamma is 0, so I think, just wait. सेम आर्ग्यूमेंट आपको वापस लगाना पड़ेगा. सो जी एक्स है के ऊपर, तो फाई नॉट डैश gx, let's call it the corresponding polynomial over k dash, let's call it g dash x. ये corresponding polynomial है k dash के ऊपर. ठीक. Now as g gamma is 0, तो इस पे phi लगाएंगे. Can I say that g dash of gamma dash is also 0? G dash of phi gamma is 0. Is that fine or not? Yes or no? It's quite simple. Same argument. Basically what is happening, let's say gx है आपको कुछ summation में भी what you want to call ci xi, right?
सो जी गामा, दिस इज 0, राइट। इस पे दोनों तरफ तो ये एलिमेंट है कहाँ, जी गामा है कहाँ पे, जी के कॉफिशिएंट आ रहे हैं के से, और गामा है एफ में। तो जी गामा जो एलिमेंट हुआ कहाँ होगा, एफ के अंदर F होगा। में। तो अब एफ से ई डैश में आपके पास मैप फाई स्टेटमेंट में दे रखा है, फाई इज ए गिवन मैप इन द स्टेटमेंट फ्रॉम फाई बेसिकली फ्रॉम एफ टू एफ डैश, बट एफ डैश सिटिंग इनसाइड ई डैश। तो दोनों तरफ इस पे मैं फाई ऑपरेट कर सकता हूँ, 0 विच इज फाई 0, फाई 0 सेम एज फाई जी गामा। अब नाउ जी के कॉफिशिएंट्स आ रहे हैं के से, एंड over the elements of k, phi agrees with phi naught. So what will be this? This is same as summation ci gamma I, right? This is same as summation phi ci phi gamma whole power I, and phi ci is same as phi naught ci, because ci coming from k. So, and what is this? Precisely g dash phi gamma. Is that fine? Yes, sir. सो दैट मीन्स द पॉइंट इज कि जो जी डैश का एक रूट एफ डैश के अंदर है, ठीक है। एंड व्हाट इज फाई गामा इज गामा डैश। अच्छा एक बात और, थोड़ा वापस जाएंगे, ये जो जी डैश है ये इरेड्यूसिबल होगा, देन जी डैश एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर के, बिकॉज ये जो मैप है इंड्यूस्ड मैप आइसोमॉर्फिज्म फाई नॉट डैश, इट मैप्स इरेड्यूसिबल टू इरेड्यूसिबल। तो दैट्स व्हाट वी हैव प्रूव्ड। वी स्टार्टेड विद गामा, गामा डैश। गामा डैश कहाँ पर है, एक इमेज में है एफ की, विच एक्सटेंड्स फाई नॉट, राइट। तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि ये जो गामा डैश है इट सेटिस्फाइज एन इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, व्हाट इज दैट, जी डैश एक्स। और उस जी डैश एक्स का एक रूट एफ डैश के अंदर है, व्हाट इज दैट। अच्छा एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, रुको, वेट वेट वेट, ये जो फाई गामा गामा डैश नहीं है, वेट वेट वेट, इट्स अ करेक्शन, थीटा गामा इज गामा डैश है ना बेसिकली। हमने क्या लिखा है, थीटा गामा इज गामा डैश, ऑल राइट। सो यहां से आई मीन व्हाट वी वांट टू कंक्लूड फ्रॉम हियर, दस फाई गामा कहां पर है, एफ डैश में, इज द रूट ऑफ, बिकॉज जी डैश फाई गामा इज 0, राइट। यही तो आ रहा है इक्वेशन, 0 देन दिस फाइनली जी डैश फाई गामा इज द रूट ऑफ g dash x, which is an irreducible polynomial over k dash। तो यही तो हमें दिखाना था, दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शो, इज इट नॉट। देखो वापस जाते हैं, वी स्टार्टेड विद एनी एलिमेंट, आर्बिट्ररी एलिमेंट गामा डैश, कहां पर है, थीटा एफ में।
ठीक है, तो गामा डैश के करस्पॉन्डिंग इसका प्री इमेज होगा गामा, सो गामा डैश इज थीटा गामा, राइट। जी एक्स एम एम पी है गामा का के ऊपर, तो गामा डैश जी डैश एक्स का रूट होगा। इज दैट फाइन कि नहीं? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? सी यू हैव टू टेल मी, आर यू गेटिंग और नॉट? सेम आर्ग्यूमेंट लगेगा, राइट, क्योंकि ये जो मैप है थीटा, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग फाई नॉट। आई मीन इट्स सेम थिंग। जैसे यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे फाई लगाया आपने, राइट, फाई की जगह अगर आप थीटा लगाओगे तो जी डैश थीटा गामा मिल जाएगा आपको। सो द पॉइंट इज कि गामा डैश जी डैश का एक रूट है, जी डैश एक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है के डैश के ऊपर, उसका एक रूट फाई गामा एफ डैश के अंदर है। तो यही मुझे दिखाना था। Gamma dash satisfies an irreducible polynomial. What is that? G dash x over k dash having a root. What is that? Root कौन सा है? Phi gamma. In f dash. That's what precisely I wanted to show, to establish B. Is this all right? Yes, sir. So that means this proves B. So we have settled the first part completely. Thus, E double dash is the normal closure of f dash over k dash. So come back to the statement. What is happening? इतना गैप कैसे रह गया? नो इट्स फाइन। अभी स्क्रीन पे गैप दिख रहा था, आपको भी दिख रहा था क्या? Yes, sir. नहीं, गैप नहीं है। ऑल राइट, ओके, सो कम बैक टू द स्टेटमेंट. We established till here. We established the statement till here. So this moreover part we will establish tomorrow. So tomorrow we will complete this proof. If you have any doubt, anything from today's lecture, you can ask me. Yes? Okay, so please do this. Write the neat proof of this result yourself, and in case of any problem, you can ask me in the next lecture. Right? So in case no doubt, I'm leaving now. We'll meet on Tuesday. On Monday, you will have the tutorial.